Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class for class 5. All the students must get ready with their books Better English Literacy Skills by Maria Relly for class 5 with their pencils and pens. Today we are going to start with Unit 16, page 79, Comprehension, and the title is The ABC. Unit 16, page 79, Comprehension, the ABC. I hope you have opened your books at page 79. This is a poem written by Spike Millingen. Reading an explanation of the ABC. This is not a text, right? This is a poem. And poem is sung in a different way. It is not read like a paragraph, it is read in a different way. And there are four lines stanzas. उर्दू में अगर आपने किया हो, नज़म की हो तो उसमें बंद होते हैं, राइट? इंग्लिश में बंद को कहते हैं stanza. This is the first stanza of the poem The ABC. Let us start now. It was midnight in the schoolroom and every desk was shut, when suddenly from the alphabet was heard a loud tut tut. Midnight means darkness. Shut means closed. Suddenly means at once. And tut tut means sound. It's a classroom where every desk is closed, and this is darkness. It was darkness, it was late night in the schoolroom, and all, as you know, at night we don't get go to schools. So every desk means table, मेज को बोलते हैं, जो खुलती और बंद होती है. Every desk was closed. When suddenly from the alphabet, poem, as you know, the name of the poem is the ABC. So alphabets are ABC, 26 alphabets. When suddenly from the alphabet, अचानक उन alphabets में से आवाज आई, was heard a loud tut tut. Tut tut is the sound. Tut tut की आवाज आई. आधी रात को क्लासरूम में अंधेरे में अचानक अल्फ़ाबेट्स में से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई. This is the explanation of stanza number 1. I repeat. It was midnight in the schoolroom and every desk was shut, when suddenly from the alphabet was heard a loud tut tut. Said A to B, I don't like C. His manners are alike. For all I ever see of C is a semicircular back. Manners means etiquettes. इखलाक को बोलते हैं. Lack means absence and semicircular means half. What did the letter A said to letter B? A ने B से क्या कहा? I don't like C. हमारे letters A B C से ही start होते हैं. A ने B से क्या कहा? I don't like C. मुझे C अच्छा नहीं लगता. Why? His manners are alike.
उसमें मैनर्स नहीं है, उसमें तमीज़ नहीं है, उसमें इखलाक नहीं है। ए को सी पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि सी में इखलाक नहीं है, मैनर्स नहीं है। फॉर ऑल आई एवर सी ऑफ सी, और मैं जब भी सी को देखता हूँ, इज़ अ सेमी सर्कुलर बैक, वो मुझे आधा नज़र आता है। वो कभी पूरा नहीं होता, वो आधा नज़र आता है। As you can see in the picture, C is not full, it's a half. आधा O होता है ये, ठीक है, it's a half O. So this is the explanation of stanza 2. I repeat the stanza again. Said A to B, I don't like C. His manners are alike. For all I ever see of C is a semicircular back. In the first stanza, I explained, मैंने फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि आधी रात को अल्फ़ाबेट से साउंड्स आने स्टार्ट हुई। तो साउंड में ए ने बी से क्या कहा? आई डोंट लाइक सी। मैं सी को जब भी देखता हूँ ये मुझे आधा नज़र आता है। ए बी सी। आई disagree, said D to B. I've never found C so. From where I stand, he seems to be an uncompleted O. जैसे आपको मैंने सेकंड स्टेंजा में बताया, सी फुल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। होता है नहीं मीन्स लेटर ही ऐसा है, बट इट अगर इसको फुल कंप्लीट कर दिया जाए तो इट बिकम्स ओ। आई डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब है आई ऑब्जेक्ट, यानी मैं तुम्हारे साथ इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। सेड डी टू बी, लेटर डी ने बी से कहा कि मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता, मुत्तफिक नहीं हूँ। आई हैव नेवर फाउंड सी सो, मुझे तो सी बदतमीज़ नहीं लगता। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड ही सीम्स टू बी, मैं जहाँ भी खड़े होकर उसको देखता हूँ वो क्या नज़र आता है? एन अनकम्प्लीटेड ओ, वो मुझे एक इनकम्प्लीट ओ नज़र आता है, नामुकम्मल ओ नज़र आता है। आई डिसएग्री, सेड डी टू बी, I've never found C so. From where I stand, he seems to be an uncompleted O. Uncompleted means incomplete. C was vexed. I'm much perplexed. You criticize my shape. I'm made like that to help spell C at and cow and cool and cape. C was vexed. Vexed means displeased. नाखुश हुआ. Vexed means crossed हो जाना, नाखुश हो जाना. आई एम मच परप्लेक्स्ड, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, घबरा गया हूँ। यू क्रिटिसाइज माई शेप, तुम तनकीद करते हो मेरी शेप पर। आई मेड लाइक दैट, मुझे इसी तरह से बनाया गया है। टू हेल्प स्पेल सी एट, ताकि मैं वर्ड्स की हेल्प कर सकूँ जो सी से स्टार्ट होते हैं। एंड काउ एंड कूल एंड केप, द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड काउ इज सी, द बिगिनिंग ऑफ कूल इज सी, द बिगिनिंग ऑफ केप इज सी। ये सी ने अपने बारे में बताया है कि मैं हेल्प आउट करता हूँ वर्ड्स बनाने में। इसमें मेरा क्या कसूर अगर मेरी शेप इस तरह से है? सी वॉज वेक्स्ड, आई एम मच परप्लेक्स्ड, यू क्रिटिसाइज माई शेप, आई एम मेड लाइक दैट टू हेल्प स्पेल सी एट एंड काउ एंड कूल एंड केप। He is right, said E. Said F. Whoopee, said G. Ip ip hooray. You're dropping me, wrote H to G. Don't do it, please, I pray. He's right, said E. E ने क्या कहा? ठीक कह रहा है. Said F. F ने क्या कहा? Whoopee. Whoopee means मजाक करना. Said G. Ip ip hooray. एक साउंड है खुशी का जो प्रोड्यूस किया जाता है. Ip ip hooray. You're dropping me. Dropping means throwing me. तो मुझे गिरा रहे हो. Road. Road means shouted.
किसने शाउट किया? एच ने शाउट किया जी को कि तुम मुझे गिरा रहे हो। डोंट डू इट प्लीज आई प्रे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत गिराओ। He's right, said E, said F, whoopee, said G, ip ip hooray. You're dropping me, roared H to G. Don't do it, please, I pray. Moving to the next stanza. This is stanza number 6. Out of out of my way, L said to K. Out of my way, L said to K. I'll make poor I look ill. To stop this stunt, J stood in front. And presto, L was Jill. Out of my way, L said to K. L ने K से क्या कहा? मेरे रास्ते से हट जाओ। I'll make poor. मैं तुम्हारे साथ ऐसे लगा हूँ जैसे मैं मर गया हूँ। I look ill. तुम्हारे साथ रहकर मैं बीमार दिखाई देता हूँ। इन दोनों ने आपस में फाइट स्टार्ट कर दी। To stop this stunt, stunt means fight. J stood in front. J बीच में आ गया. And presto, presto means जल्द ही. L was Jill. L से पहले I लगना था तो I नहीं लगा, J लग गया तो L बन गया Jill. Out of my way, L said to K. I'll make poor look ill. To stop this stunt, J stood in front. And presto, L was Jill. The next stanza is, you know, said we, that W is twice the age of me. For as a Roman, V is 5. I'm half as young as he. You know, तुम जानते हो, said V. V ने क्या कहा? क्या तुम जानते हो that W is twice the age of me? कि ये जो W है मुझसे 2 गुना उम्र में बड़ा है. For as a Roman, V is 5. क्योंकि रोमन में आप जैसे अब क्लास 5 लिखते हैं तो क्लास 5 कैसे लिखा जाता है? It's like this, right? It's like this. And when we write W, this is V. जैसे आप 5 लिखते हैं, ये 5 है. और अगर इस 5 को डबल किया जाता है तो फिर क्या आता है? फिर क्या आ जाता है? डबल V हो जाता है. तो डबल V बन गया 10, राइट? तो 5 इज हाफ. एंड इसको अगर हम डबल करते हैं, इसी को अगर हम डबल करते हैं, सी, एक ये 5 हो गया, दूसरा ये 5 हो गया, ये बन गया W. तो ये 5 प्लस 5 मेक्स 10. तो W is 10 and V is 5. Right? Okay. जी. Moving to the next slide now. X and Y yawned sleepily. Look at the time, they said. Let's all get off to Betty Bye's. They did, then Z. Now, what does this stanza mean? These are the last 3 letters of English alphabet. X and Y yawned. Yawned का मतलब है sniffed, यानी जमाई लेना. नींद आने से पहले जो हम मुंह खोलते हैं उसको कहते हैं yawning. ठीक है? उनको yawning स्टार्ट हो गई. They started feeling sleepy. उनको नींद आने लगी.
लुक एट द टाइम दे सेड। उन्होंने सब अल्फ़ाबेट्स को क्या कहा, टाइम देखो क्या है, आधी रात है इस वक्त। लेट्स ऑल गेट ऑफ टू बेड दी बॉयज। चलो सब चलते हैं सोने के लिए। गेट ऑफ मीन्स गो। दे डिड, उन्होंने इसी तरह से किया। देन जी, और फिर वो सो गए। Z is the Z is the last letter of English alphabet A B C. Okay, let's go back to what we read. Okay, ready? The first stanza is: It was midnight in the schoolroom and every desk was shut, when suddenly from the alphabet was heard a loud tut tut. आधी रात के वक्त इंग्लिश लेटर्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया। Said A to B, I don't like C. His manners are a lack. For all I ever see of C is a semi-circular back. A ने B से क्या कहा, मुझे C अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? उसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं। जब भी मैं C को देखता हूँ मुझे वो आधा नज़र आता है। This is what A said to B. I disagree, said D to B. I have never found C so. From where I stand, he seems to be an uncompleted O. डी ने बी से क्या कहा, मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता। मैंने जब भी सी को देखा है वो मुझे हमेशा इनकम्प्लीट लगा है। इनकम्प्लीट लाइक ओ। सी वॉज वेक्स्ड, आई एम मच परप्लेक्स्ड। You criticize my shape. I'm made like that to help spell C at and cow and cool and cape. सी ने जब ये सुना अपने बारे में उसको बहुत गुस्सा आया, वो खफा हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, घबरा गया। उसने कहा तुम मेरी शेप पर क्रिटिसाइज क्यों करते हो? मैं तो हेल्प करता हूँ वर्ड्स बनाने में, उनको स्पेल करने में, जैसे कि काउ, कूल एंड केप। ही इज राइट, सेड ई, said F, whoopee, said G, ip ip hooray. You're dropping me, wrote H to G. Don't do it, please, I pray. E ने क्या कहा, वो ठीक कह रहा है, C is right. F ने कहा whoopee, यानी कितना मज़ा आ रहा है इस बात को लेकर। Said G, ip ip hooray, वो भी खुश हो रहा है G भी। You are dropping me, wrote H to G. जी जब खुशी में छलांगे लगा रहा था तो एश ने उसके ऊपर शाउट किया और कहा तुम मुझे गिरा रहे हो। डोंट डू इट प्लीज आई प्रे, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ। आउट ऑफ माई वे, एल सेड टू के, I'll make poor I look ill. To stop this stunt, J stood in front, and presto, ill was Jill. एल ने के से क्या कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत पुअर मरा हुआ सा लगता हूँ। आई लुक इल, मैं बीमार लगता हूँ। इस झगड़े को रोकने के लिए बीच में कौन सा लेटर आ गया, जे। एंड प्रेस्टो, और जल्द ही सून इल बन गया जिल। में सिर्फ आई और जे का फर्क है, आगे दोनों में डबल एल है। राइट, इस टर्न को रोकने के लिए कौन बीच में आ गया, जे। You know, said we, that W is twice the age of me. For as a Roman, V is 5. I am half as young as he. मैंने आपको डिस्प्ले करके बताया, ये अभी भी आपके सामने है। V जैसे आप लिखते हैं क्लास 5, 5 में सिंगल V लिखा जाता है, और जब इस V को आप डबल कर दें तो वो डबल U बन जाता है। तो 5
एक V 5 दूसरा V 5 plus 5 makes 10. अगर W 10 years का है तो V कितने years का हुआ 5. So I am half as young as he. X and Y yawned sleepily. Look at the time, they said. Let's all get off to Betty Buy's. They did. Then Z. X और Y ने मुंह खोला, उनको नींद आ रही थी, तो उन्होंने कहा टाइम देखो क्या हुआ है, आधी रात है, चलो बेड पर चलते हैं, बाय करते हैं। और उन्होंने इसी तरह किया। देन दे डिड एंड देन जी, देन जेड मीन्स सब के सब सो गए, खामोश हो गए। These are 8 stanzas of the poem DABC, and the poet of this poem is Spike Billington. Let's move to today's homework. And what is the homework today? It's a written homework. You have to write the meanings of the words in English notebook. The first word is midnight. Second is suddenly. Third is perplexed. Fourth is twice. Fifth and fifth is yawned. These are 5 words. Okay. आपने इंग्लिश की क्लास वर्क नोटबुक में ये वर्ड्स मीनिंग्स करने हैं। आप से अगर किसी ने अपनी नोटबुक स्कूल में चेकिंग के लिए भेजी है वो बाद में अपना काम कर ले, या रफ नोटबुक में कंप्लीट करके अपने चेकर्स को स्क्रीनशॉट्स भेज दें। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज मिडनाइट, जिसका मतलब है डार्कनेस। Suddenly means at once. Perplexed means confused. Twice means double. And yawned means sniffed. आपको मैंने साथ साथ मीनिंग्स लिखवाए हैं। हर स्टैंजा में मीनिंग्स गिवन थे। आई रिपीट द मीनिंग्स अगेन। Midnight means darkness. Suddenly means at once. Perplexed means confused. Twice means double. And yawned means sniffed. I hope you have understood today's lecture. Thank you very much for listening to my presentation. And if you are having any questions, you can ask me in the next class. Thank you very much for listening.